Dear students, very sorry. I'm again starting with this particular course. Hello everyone, myself Mahesh Sangvi, working as Professor and Head of Department of Computer Engineering, and today we will deal with the subject data structures. This is the orientation program. It is introductory lecture where you will understand the ABCD of what data structure. I hope you will like this particular video and you will subscribe my YouTube channel. So let's look at the today's agenda. The main agenda of today's session is what you must know the instructor. Myself will act as instructor, and with me, Professor Deepali Pawar madam will also act as what course instructor. We both will deal with what certain topics. She will cover 80% of your syllabus and I will cover 20% of your syllabus. Now regarding today's outline, so today I will cover teaching scheme, prerequisite courses, course objective, course outcome, as well as what content which is available into what various books. Regarding teaching scheme, this I have already told you that myself is what acting as course in charge, and with me Professor Deepali Pawar madam will act as what course in charge. So there will be two faculties for you and we will deal with what the syllabus, entire syllabus of what this fundamentals of data structure. Regarding course name, name itself is what fundamentals of data structure, and its course code is 210242, which is highly needed for observing your question paper and identifying exact question paper. Regarding course head, you have both the heads here, that is theory as well as what practical head. For theory head, there will be 3 credits, and for practical heads, there will be 2 credits. Practical is divided into 2 major parts, that is term work as well as what your practical examination. So term work will be there where you will what gonna perform your practical properly, and entire observation will be done based on your timely submission, your regularity, and the way you are actually what performing your practical and giving oral examination. Based on that, you will get the marks of what term work. And here you will observe practical examination pattern having term work 25 marks and practical is having what 50 marks. So term work will be your internal evaluation and practical will be what university practical examination, and in practical you need to perform well. Now regarding theory pattern, theory has again of 100 marks and it is divided into 2 examination, in semester examination and end semester examination. Now you should understand that this is the same pattern which was available to you in what first year. So those students were in year drop or today they have just joined as direct second year students should understand that this is important pattern. There will be 2 examination from university. One will be for 30 marks exactly after 45 days of commencement of your teaching, and one will be what end of the semester, and both will be a descriptive written examination where one will be of 30 marks and another one will be what 70 marks. You must understand that out of this means in this end sem examination you should earn at least 40% of the marks. If you are unable to do that, and if you are failed to gain total 40% of the marks, then you can understand your result will be what fail. I should not discuss anything about fail. I am sure that all my students will get what at least first class in this particular subject. So trust me, this is one of the core subject needed everywhere. So please understand the importance of this subject. So total 175, so 175 marks weightage is given to this subject. This subject is needed everywhere in industry. If you go anywhere in every industry, you need such type of subject. So you can observe here the course dependency of this subject. Fundamentals of data structure, this is the subject. You will understand that system programming and operating system, this is the subject available into third year. So once you understand this subject, for understanding of this subject you need to have what fundamental knowledge of your PPS subject available into what first year, and discrete mathematics which is there currently, and I hope Professor Shakat BP will what deal with this subject. So you need knowledge of both the subject to understand what fundamentals of data structure. Once you understand fundamentals of data structure, then based on this you will understand there is one of the lab, that is data structure laboratory, and in third it is available into what second year.
and this particular subject is available into third year, that is what system programming and operating system. Then one more subject of what third year, that is database management system, that is also there into third year, and design and analysis of algorithm, this is also the subject which is available into third year. And again, you can understand there are so many subjects which are what dependent on this fundamentals of data structure into final year as well. We have only shown you the dependency chart of which is actually needed as a prerequisite from first year or second year, and based on this in next semester there will be a advanced data structure subject, as well as some of the subjects that are listed here which is highly needed into what the third year. So my dear students, it is one of the core subject. Its weightage is also there. Those who are planning for higher education, those who are planning for MTech or MS, you again need what in gate examination, one of the subject is included known as what data structure. So this is one of the core subject in any of the industry. When you are actually giving what the placement, if you are planning for what job, then for the placement activity you need what this subject data structure. Compulsorily this subject will be there in your technical round. So there will be 3 round: aptitude round, technical round, and HR round. So in technical round you need what one of the subject like what data structure. So I hope you will understand the opportunity and importance of this subject. Now regarding course objective, so these are the course objective, okay, and you all should know the importance of this course objective. So course objective is very simple. Here the meaning of course objective is that why we are learning this subject. So these are the future points that after gaining this particular subject we should able to achieve this many points. So these are the objectives where you should understand the basic techniques of what algorithm and its analysis. Then you should understand various algorithmic strategies and its approaches which is actually there into what your problem solution. Then you must understand the memory requirement for various data structure. This will happen when you go with what space complexity. You will understand the importance of what memory requirement of any of the data structure which you have to study this time. Then to understand the importance of what searching and sorting, you know that one of the best application of computer engineering, why computer is actually needed everywhere, because searching is one of the best option. Whenever you need to search anything faster, आप आपके कंप्यूटर में भी कोई चीज आप सर्च करने जाते हैं उतना फास्ट आपको नहीं मिलता है जितना गूगल सर्च इंजन के ऊपर आप लोगों को चीजें मिलती है, बिकॉज searching is very important. So here you will understand how searching algorithm can be implemented and various methods of what sorting, because unless and until you put the things properly you will not get it what fastly. So that is what the logic behind this. Next you need to acquaint with what the structural constraints and its advantages that can be mainly used for what usage of data. And at the end you should able to understand the standards and abstract data representation methods. Also you should able to identify appropriate data structures and algorithm for a particular application. So any of the application will be given to you and there will be variety of data structure. Now it's up to you, it's up to your brain, it's up to your IQ. You need to identify which appropriate data structure can be what used. At the end of this course I hope you will definitely understand all this particular part. Now regarding course outcome, this is very very important. Course outcome is actually giving you what this should be the outcome after what getting this particular subject completely. जब ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट होगा तब क्या क्या नॉलेज आपको आना चाहिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए CO1 is associated with your unit number 1 where use appropriate algorithmic strategy फॉर बेटर एफिशिएंसी। यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम्स है, उसके अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोगों ने एक्चुअली यूज करनी चाहिए जिससे हमें बेटर एफिशिएंसी मिल सकती है। दैट इज योर कोर्स आउटकम 1। Now course outcome 2 is regarding understand and implement the linear data structure using Python. Now you must be aware that Python is one of the dominating language. आपको पूरा data structure Python में है और कुछ particular part object oriented programming language यानी C++ में भी आप लोगों को रखा गया है। So you should understand and you should able to implement. There are 2 keywords important, आपको समझना भी है और आपको implement भी करते आना चाहिए। क्या? Linear data structure। कौन से linear data structure तो आगे आपको समझ में आएगा। One of the linear data structure that is what array, and based on this array there is these are all CO3 से लेके CO6 तक
सारे की सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। सो दिस टाइम आप लोगों को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही क्या करना है, समझना है। नेक्स्ट सेमिस्टर में आपको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी आने वाले हैं। So I'll let you know about this particular third course outcome. Implement and analyze various searching and sorting techniques. बहुत टाइप के सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक्स है, आप सबको वो सारा समझने के लिए मिलेगा। आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर पाओगे और आप एनालाइज भी कर पाओगे कि विच विल बी बेटर फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो दिस इज व्हाट एन aim of CO3. Now CO4, that is course outcome 4, implement the linked list and its various application. ये एक actually linear data structure है, linked list को linear data structure भी बोल सकते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर इसका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का वे जो भी है वो देखना रहेगा और उसका इंप्लीमेंटेशन आप सभी लोगों को एट द एंड आएगा। Then CO5, that is what implement stack and its various operation. 6 is implement queue and its various operation. आने वाले स्लाइड्स में आपको ये समझ में आएगा कि स्टैक क्या है, क्यू क्या है, एरे क्या है, ये मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं। Now the next part is regarding course content. कौन से 6 यूनिट्स आप लोगों को दिए गए हैं। वेरी फर्स्ट यूनिट इज व्हाट इट विल डील विद द एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट डेटा स्ट्रक्चर। ये 7 आवर्स का कोर्स रहेगा जहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है और इसको हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट यूनिट नंबर 2, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो एरे जो भी है उसका आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, यूज करना रहेगा और आप लोगों को हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे कि किस तरीके से एरे का हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देन देयर विल बी अ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ये दोनों मेथडोलॉजी जो भी है इसका डिटेल जानकारी आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में दिया जाएगा। यूनिट नंबर 4 विल डील विद व्हाट लिंक लिस्ट, वेयर यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ऑपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट लिंक लिस्ट। At the end, unit number 5 that will deal with what stack. It is one of the linear data structure. आप लोगों को समझ में आएगा कि stack क्या है, उसका implementation हम लोग कैसे कर सकते हैं, what are the various applications of stack, कहाँ पर अभी भी आज की डेट में stack का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। Then we will have to understand what unit number 6, that is queue. क्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। हम जनरल हम लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशंस क्यू के पता है, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा ये आपको यूनिट नंबर 6 में दिखाया जाएगा। आप यदि गौर से ये सारे इमेजेस को ऑब्जर्व करोगे, ये इमेजेस आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो मैं आपको यहाँ पे अभी बताने की कोशिश कर रहा था। नाउ विल मूव टुवर्ड्स व्हाट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट द टेक्स्ट बुक। विच टेक्स्ट बुक्स आर नीडेड। मुझे पता है आज की डेट में टेक्स्ट बुक बहुत कम आप लोग रेफर करते हैं, आपके फेमस बुक मुझे पता है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोर सब्जेक्ट की बात आती है माय डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 40 देयर इज ओनली 10 कोर सब्जेक्ट। तो 10 के 10 कोर सब्जेक्ट यदि आप रेफरेंस बुक्स में से पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छा खासा जानकारी मिल सकता है और कोई भी आने वाला इंटरव्यू जो भी है वो ब्रेक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज रेफर ऑल दिस टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक। ये सभी के सभी बढ़िया है, लेकिन बहुत ज्यादा जो सिलेबस है, हॉरोविट्ज सानी का बुक यदि आप लोग देखोगे तो आपको बहुत सारा सिलेबस इसमें से कवर हो जाता है। दूसरा, आप यदि फ्रोजन का बुक देखोगे, दैट इज आल्सो वेरी गुड, जो आप लोग एक्चुअली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारे बुक C++ के इंप्लीमेंटेशन के बारे में बता रहे हैं। आप लोगों को पाइथन बेस्ड भी जो है सेकंड जो भी है, जैसे माइकल और गुडरिच का जो भी बुक है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इन्होंने पाइथन में इस चीज को दिया है। सो समवेयर यू नीड C++, नॉलेज ऑफ C++, एंड समवेयर यू नीड व्हाट, द नॉलेज ऑफ पाइथन। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग आपको पढ़ाएंगे, हम लोग आपको क्लैरिटी देंगे कि कौन सी चीज पाइथन में करनी है और कौन सी चीज C++ में करनी रहेगी आप लोगों को। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक्स। So let's move towards the introduction to data structure. Yes, you must be waiting for what exactly is data structure. Sir, कब से data structure बोले जा रहे हैं, क्या होता है ये data structure? Data structure, very simple definition, a way to organize your data in a computer. डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करवाना है कंप्यूटर में, उसके बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पर तरीके हैं, बहुत ज्यादा टाइप्स है। सो द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्लीज फोकस कीजिए, इसके ऊपर मैं आपको क्विज क्वेश्चन में पूछ सकता हूं। ओके, डेटा स्ट्रक्चर हैज 2 टाइप्स, primitive data structure and non-primitive data structure. Primitive data structure you have already used, like integer, float, character, pointer. You might have used this into your C or Python programming. All these primitive data structures are known to you, and based on this primitive data structure we are actually creating what non-primitive data structure, which is very important. And entire in case of this data structure,
in semester 1 and in semester 2 also we have to study all this non-primitive data structure. So you should understand the non-primitive data structure is given like array, list or files. It has again two types, linear data structure and non-linear data structure. So linear data structure ये अब पूरे सेमिस्टर में आप लोगों को क्या करना है, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में लिनियर डेटा स्ट्रक्चर जो भी है उसका स्टडी आप लोगों को दिया गया है। तो कौन से लिनियर डेटा स्ट्रक्चर रहेंगे? सो यू नीड टू स्टडी एरे, यू नीड टू स्टडी लिस्ट मींस व्हाट, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के दो टाइप्स है, लीनियर लिंक लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिंक लिस्ट। ओके तो यहां पर यदि आप देखोगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के मैं जो बोल रहा हूं वो समझ लीजिए। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे आएगा, लिंक लिस्ट आएगा, स्टैक आएगा, क्यू आएगा, चार चीजें कहां पर आएगी? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में दो चीजें आएगी, एक आएगा आपका ट्री और दूसरा आएगा आपका ग्राफ। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। आप लोग स्टैक और क्यू या इधर एरे या लिंक लिस्ट से क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ग्राफ एंड ट्री कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट एज वेल एज व्हाट, एरे। एंड फाइल्स इज वन ऑफ द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग नॉर्मली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आई एम सिंपली रिपीटिंग the fundamental two types of data structure is primitive data structure, non primitive data structure। non primitive data structure के भी दो टाइप है, एक है linear data structure, दूसरा है non linear data structure। linear data structure ये सेमिस्टर में आप लोगों को रहेगा, non linear data structure आप लोगों को नेक्स्ट सेमिस्टर में रहेगा। linear data structure में आप लोगों को array आएगा, लिंक लिस्ट आएगा, स्टैक आएगा, क्यू आएगा। ये चारों डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे और दो डेटा स्ट्रक्चर आपको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे, वो है आपका ट्री और दूसरा है ग्राफ। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। नाउ टुवर्ड्स व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस डेटा स्ट्रक्चर। बहुत अलग अलग टाइप के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है, तो एरे का एप्लीकेशन क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं एरे यानी क्या, जहां पे आप एक साथ में कोई भी चीजें क्या कर सकते हैं, सिमिलर फैशन में स्टोर कर सकते हैं, सिमिलर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर्स, दैट इज नोन एज व्हाट, एरे। तो एरे के दो टाइप्स है, वन इज वन डायमेंशनल एरे एंड अनदर वन इज व्हाट, टू डायमेंशनल एरे। एक्चुअली इसके थ्री टाइप्स है। मल्टी डायमेंशनल एरे भी हम लोग एक्चुअली क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, और आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। सो वन डायमेंशनल यानी क्या, जिसको एक ही डायमेंशन होगा। वेक्टर जैसा आप लोगों ने देखा है आपके मैथमेटिक्स में वेक्टर कैलकुलेशंस जो भी देखा था, तो दैट वेक्टर बार इज अल्टीमेटली व्हाट, द एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल एरे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को डेटा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का भी नॉलेज लगेगा। तो जो सेट थियरी है, जो सेट होता है, दैट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग व्हाट, वन डायमेंशनल एरे। सो दैट इज व्हाट एन एप्लीकेशन। यदि एप्लीकेशन आप यदि यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ एरे कैन बी योर स्टैक। स्टैक हम लोग एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और जो इमेज आप लोगों को यहाँ पर अभी मैंने दिखाई है, दैट इज अल्टीमेटली व्हाट, इमेज ऑफ स्टैक। सो एरे का एप्लीकेशन क्या है? तो एरे का एप्लीकेशन है स्टैक। ओके, नाउ दी टू डायमेंशनल एरे, एप्लीकेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे इज व्हाट। आप सभी लोग थिएटर में जाते हैं, बराबर है? तो थिएटर में आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई देता है, दैट सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी योर टू डायमेंशनल एरे। आप देखिए यहाँ पर समझ में आएगा आपको, ये आपको एक डायमेंशन दिखाई दे रहा है जो कॉलम के फॉर्म में है, ये दूसरा डायरेक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, रो के फॉर्म में है। तो ये सारा आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको रियल टाइप एग्जांपल देने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं, सो दैट यू कैन कोरिलेट आर डेटा स्ट्रक्चर विद व्हाट, आर रियल लाइफ एग्जांपल। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को थिएटर का एग्जांपल दिया है। आजकल मूवी देखना सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बंद है, लेकिन हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल एरे में हो सकता है। Next type of data structure is what your the applications are what, searching and sorting। तो सर्चिंग में एग्जैक्टली क्या होता है तो आपको समझना है। there may be what different type of searching, one of the binary search and sequential search is given। आप यदि कोई सीक्वेंस में चीजों को सर्च करते हैं, आप कई बार आपका नंबर यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पर क्यू में जो पार्टिसिपेंट का लिस्ट है, वहां पर यदि मैं कुछ सर्च करने के लिए आपको बोलता हूँ तो आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको क्या करोगे, सर्च करोगे, दैट इज सीक्वेंशियल सर्च। यदि आप लोगों को लगता है कि लिस्ट सॉर्टेड है तो हम लोग डायरेक्टली ए से लेके बी के ऊपर, बी से लेके सी के ऊपर, सी से लेके डी के ऊपर, कहां से नाम स्टार्ट होता है वहां पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ व्हाट, सर्चिंग। तो सर्चिंग इज यूज्ड टू सर्च व्हाट, डेटा।
सॉर्टिंग यानी क्या, आप सभी लोगों को ये पता होगा कि सॉर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा है हाइट के अनुसार हम लोगों को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, या उसके वेट के हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, उसको सॉर्ट करेंगे। तो जो एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पर जो जीआईएफ आपके सामने रन हो रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, सॉर्टिंग। तो एंड ऑफ द इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, ऐसा जो भी लिस्ट मिलेगा, दिस लिस्ट इज नोन एज व्हाट, सॉर्टेड लिस्ट। और एक चीज जो आप सभी लोगों ने खेला हुआ है, ओके, सॉलिटायर ये गेम आप लोगों ने खेला हुआ है, तो यहाँ पे आपको समझ में आता है, इन सॉलिटायर आल्सो वी आर नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर सॉर्टिंग। हम लोग ताश को क्या करते हैं, जो भी प्लेइंग कार्ड्स है उसको सॉर्ट करने का काम करते हैं। ये सारी टेक्निक्स आप लोगों को समझ में आएगी जब हम लोग ये डेटा स्ट्रक्चर के साथ में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो गेमिंग में भी इसका काम आता है, सर्चिंग में भी इसका काम आता है। गूगल सर्च आप ले लीजिए, आप जीपीएस या जो भी आप लोगों को यहाँ पर लेना है, एप्लीकेशन लेना है, डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड एवरीवेयर. So this is all about searching and sorting. Now the next type of data structures are ultimately what, stack. तो स्टैक में आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग लेडीज लोग देखिए चूड़ियां पहनते हैं, या आप सभी लोग फ्रेंडशिप बैंड आज की डेट में लगाए होंगे। तो फ्रेंडशिप बैंड हम लोग लगाते जाते हैं, तो फर्स्ट फ्रेंड जो भी आएगा उसका बैंड, सेकंड फ्रेंड आया उसका बैंड, थर्ड फ्रेंड आया उसका बैंड। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है कि एट लास्ट ये जो भी बैंड्स है, जो फर्स्ट बैंड आप लोगों ने पहना हुआ है, वो लास्ट में जब आप निकालने जाओगे तो लास्ट में बाहर आएगा। वही दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर यदि देखोगे, यू विल गेट व्हाट, दिस टावर। ये टावर पे हम लोग क्या करते जा रहे हैं, चीजें जो भी लगोरी आप लोग खेले होंगे है ना, तो वहां पे हम लोग चीजें जो भी वो डालते जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट डाला हुआ है वो क्या आएगा, लास्ट आएगा। सो हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, या फिर ये आपको समझना है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ओके, दैट इज अल्टीमेटली व्हाट, योर स्टैक। क्यू यानी क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पर आप देखिए जो सेकंड एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जैसे हम लोग आज की डेट में बस से आते हैं, हम लोग क्या है, टोल नाका के यहाँ पर रहते हैं, तो टोल नाका में जो सीक्वेंस में फर्स्ट है उसका पहले क्या हो जाएगा, उसका गाड़ी पहले निकल जाएगा, जो सेकंड में है उसका गाड़ी जाएगा, जो थर्ड में है उसका गाड़ी जाएगा। या फिर यहाँ पर आप लोग यदि ऑब्जर्व करोगे तो कोई भी क्यू, हम लोग टिकट, मूवी के टिकट लेने के लिए जाते हैं, या कोई भी टिकट, ट्रेन के टिकट लेने जाते हैं, तो वहां पे क्यू किए गए हैं। जो पहला बंदा होगा वो पहले टिकट लेगा, जो दूसरा बंदा है वो दूसरा लेगा। इस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को कोशिश किया है माय डियर स्टूडेंट्स की सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एंड यू शुड अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जिन लोगों को फंडामेंटल समझ में आया, आगे उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा जो भी लाइफ है वो। So dear students, I hope now I'll take what, the poll. Before I explain this, let me take the poll for everyone. ये पोल जो भी है ये आप सभी लोगों को दिखाई देगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, और आपको राइट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। सो बी रेडी फॉर द पोल। एक ही मिनट के लिए पोल आपके सामने खड़ा रहेगा, और उसके बाद मैं एक मिनट के बाद उसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। दो क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, आपको एप्रोप्रिएट आंसर्स जो भी हो क्या करने हैं, चूज करने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों को क्लिक करना है जो राइट आंसर है, जो वहां पे आपको क्लिक करना है और उसको सबमिट करना है। डू इट फास्ट। वाओ, many students are giving it. Twenty-one students are given. 20 seconds are remaining now. I'm waiting for other students. Out of 48, almost 35 students have given. I'm waiting for some more students. Last 3 seconds, and now I am ending this poll. Okay, I'll share the results with you so that you will understand. Just observe the result. What was your question? Very first question was, data structures has two types, dash and dash. Okay, and many of you have given right answer, that is what, linear data structure, because we have two types of data structure, linear as well as what, non-linear. जिन लोगों ने प्रिमिटिव लिया है, नॉन प्रिमिटिव लिया है, ऑल ऑफ द अबो लिया है, आप भी करेक्ट हो, क्योंकि एक्चुअली ये सारे के सारे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स है। तो राइट आंसर वाज ऑल ऑफ द अबो। तो भूल भुलैया वाला क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर के क्या है, बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन ये टू के वजह से बहुत सारे लोगों ने लीनियर ये जवाब दिया है। तो जिन लोगों ने लीनियर दिया है वो भी राइट है, जिन लोगों ने ऑल ऑफ द अबो दिया है वो भी राइट है। कांग्रेचुलेशंस टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन व्हाट, राइट आंसर. Now your second question was basically related to stack.
Stack is also known as first in, first out, last in, first out, last in, last out, and none of the above. Right answer is of orange line. Okay, and 56% have given what right answer. My dear students, understand stack यानी क्या? लास्ट में जो चीज आप लोग लास्ट में डालोगे, जो चीज आप फर्स्ट में डालोगे वो लास्ट में आएगी, या जो लास्ट में डालोगे वो सबसे पहले क्या आएगी? बाहर आएगी. सो इट्स एप्रोप्रिएट नेम इज लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट. इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर जो भी है वो दे सकते हैं. आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर व्हाट session of what poll. So I'm now stopping it and we'll move towards what the next slide. So I was talking about I have what 5 more minutes, so I'll go with 10 more minutes. So we'll go with what the remaining slides. I hope you might have what joined this Google Classroom. If you have not joined, I request everyone to please join this Google Classroom using Google class code given here. Okay. Now the next part, entire data will be available on the blog of what Pawar madam. So you need to enter to this particular blog. Don't forget to what follow this blog. If you follow this blog, you will get benefit that whenever madam will update this blog, you will get an notification. Okay, तो स्टूडेंट कॉर्नर आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर. वो स्टूडेंट कॉर्नर में आप लोगों को FDS नाम का सब्जेक्ट दिखाई देगा, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट सब्जेक्ट, you will get all the details. So this is all about what the blog. Now I request everyone to please what go to the YouTube channel, my YouTube channel as well as what madam's YouTube channel. और इस YouTube channel पे जैसे ही आप लोग जाओगे, don't forget to subscribe this YouTube channel, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेटेड वीडियोस जो भी जब हम लोग अपलोड करेंगे वो आपके सामने आते रहेंगे. इवन आज का भी वीडियो, आज का भी सेशन पूरा रिकॉर्डेड है और YouTube के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग जाके वहां पर देख सकते हैं. Okay, now this is the YouTube channel of what पवार मैडम, जहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस जो भी है वो डेटा स्ट्रक्चर्स के मिलेंगे. तो आप मैडम का भी यूट्यूब चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, द मोमेंट यू विल सब्सक्राइब, यू विल गेट व्हाट द नोटिफिकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन. और लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं. आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आप हमें इंप्रूवमेंट्स के लिए पॉइंट्स भी दे सकते हैं. योर पॉइंट्स आर नीडेड. जितने आप हमें इंप्रूवमेंट्स के पॉइंट देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे. Now the next part is regarding mobile apps. Yes, there are various mobile apps available. जिन लोगों के पास भी घर पे कंप्यूटर नहीं होगा, आप मोबाइल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर्स का डेटा जो भी है आपको बहुत सारा मिल जाएगा. इसके अलावा जो डेटा स्ट्रक्चर के अभी फिलहाल आपके सामने यहाँ पर मोबाइल ऐप दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे मोबाइल ऐप है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा. और ये जो भी मोबाइल ऐप्स है, ये आप लोगों को जब भी देखना है या इसके ऊपर जब भी कुछ काम करना होगा, तो आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा, आप लोग घर पे ही पाइथन के प्रोग्राम मोबाइल ऐप के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज यूज ऑल मोबाइल ऐप्स एंड ट्राई टू रन योर कोड. कंप्लेन नहीं करना है मम्मी डैडी के पास कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है. लैपटॉप लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी आप लोग स्मार्टफोन के थ्रू, स्मार्टफोन को ही लैपटॉप के थ्रू क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. और सारे प्रैक्टिकल्स जो भी है डेटा स्ट्रक्चर के, कंप्यूटर ग्राफिक्स के, ऑल काइंड्स ऑफ प्रैक्टिकल आप यहाँ पर रन कर सकते हैं. इसके अलावा जो प्रैक्टिकल मोबाइल पर रन नहीं होने वाले हैं, हम लोग टीम व्यूअर के थ्रू, हम आपको मोबाइल के थ्रू आपको यहाँ के कंप्यूटर को ज्वाइन करते आने वाला है और यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली जो भी प्रोग्राम्स रहेंगे उसको रन करने वाले हैं. Okay, so this is what from my end. I hope you all can able to enjoy the today's session. If you have any doubt, you can anytime ask me any sort of question. These are all references from which this slide is prepared. Very first two references is what the link of my blog and the link of Pawar madam's blog. So my dear students, thank you so much for your patience hearing. If you have any doubt, please ask me. Keep posting on what the chat window. If you have any doubt, you can please ask me on what chat window, or you can unmute yourself and you can ask me the doubts if you have. We have 7 minutes in hand. You can ask the doubt if you have. Thank you, Neil. Neil is saying that it was great session. Thanks a lot. If you have any doubts, please ask. In case of any of the students have missed what any of the slide, entire thing is available on what my blog, or it is available on what YouTube channel as well. So if you have doubt, you can please ask.